Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, a very warm welcome everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, staying healthy, staying safe, and rooting for Sushant Singh Rajput, Disha Salian, and many more. I'd say we are going to start this Back to Basics again. I remember about a year and a half ago, हमने ये शुरू किया था Back to Basics, and then almost every other channel started Back to Basics. एंड वी वुड लव टू रिवाइव दैट. बहुत सारे ऐसे सेशंस हुए थे, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने अपने व्यूज ओपिनियंस शेयर किए थे. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट I will definitely kick off again, and I will also take up all the questions. So namaskar everybody, एक बार फिर से hello Simi Raman ji, sorry last time आप connect नहीं हो पाई, तो hopefully at the end of the session we'll be able to talk to you and hear some bhajan. Hello Charlotte, hello Gloria ji, hello Kashveer ji, hello Varuni, happy 4th to everyone जो लोग भी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. हेलो जानगिरी जी, आपका पॉइंट बहुत वैलिड था. मैंने पहले भी पढ़ा था, आपने कुछ देर पहले सेशन शुरू होने से पहले ही ये कमेंट डाला हुआ था. सो आई नो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट पॉलिटिशियंस किसी के नहीं होते. सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी शेयर बचाते हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. सो अब किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी पे रिलाई करना इज लाइक मैं तो अपने लिए यूज करूंगा ये वर्ड कि बेवकूफ हूंगा मैं अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के ऊपर भरोसा करूं कि वो सुशांत के लिए जस्टिस के फाइट करेगा या उसको जस्टिस दिलाने के लिए एफर्ट करेगा. सो आई रियली डोंट हैव एनी ट्रस्ट लेफ्ट on any political leader, any politician, any political party. But भगवान पे पूरा भरोसा है, and we know spiritual powers of Sushant. We will get, he will get justice for himself. All we have to do is we have to focus and focus. और आज से ये वाले जो sessions होंगे, I will try to keep them brief because I really want to collate some of the key pieces of evidences कह सकते हैं, information कह सकते हैं, because I really want everybody to be very focused around सुशांत के murders के ऊपर. उन्होंने क्या क्या कहाँ किया, बोला, कहा गया और दिखाया कुछ ऐसी बातें करके that these guys are really the people behind it. तो आज इस वाले सेशन को मैं किक ऑफ करूंगा. सबसे पहले तो एक छोटा सा अपडेट. Thanks to people who have been really sharing a lot of information as well. Hello Yash, welcome. Hope you're doing well. And yes, let's get going. सबसे पहला this. Okay. So आज जो कि जुलाई 4th है, इंडिया में हो चुकी है. It's about 10 o'clock. आज सिद्धार्थ पिठानी की हियरिंग है इन मुंबई. Pronouncement of judgment. So आज बेल एप्लीकेशन जो इसने डाली हुई थी, जो पिछले बहुत महीनों से रिजेक्ट होती जा रही है, आज एक बार फिर से उसकी हियरिंग है. सो दिस लूजर is about to go to the court and अपनी बेल के लिए फिर से अपील करेगा. I just hope and I pray कि इसको बिल्कुल भी कोई चांस ही ना लगे बेल मिलने का. So let's hope for the best and let's keep doing the prayers. सुशांत का conspirator number 1, जिसको आज मैं conspirator number 1 बोल रहा हूँ. पहले मैंने संदीप सिंह को बोला था last time, but I'm gonna kind of shuffle them a little bit. इसको number 1 इसलिए भी बोलता हूँ because this man was actually there inside that house between 8th and 14th of June. 8 से 14 के बीच में ये वहां पर था. इसको हर चीज पता है वहां क्या हुआ, किसके साथ क्या डीलिंग हुई, किसके साथ कहाँ लड़ाई हुई, किसके साथ कौन झगड़ा हुआ, कौन उस घर में आया, कौन उस घर से गया. दिस मैन नोज इट ऑल. ये इसकी मैं कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा. बट आज के इस सेशन में एक दो चीजें और जो मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ. अगेन नॉट टू टेक एनी डिग्स ऑन एनीबॉडी, बट आई थिंक बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारी स्टोरीज, नरेटिव्स, थ्योरीज बनाई गई हैं, बहुत सारी बातें गई हैं on Twitter, on YouTube sessions and on multiple channels regarding timelines and what not. But आज एक
Actually, I'm just gonna be focused on two clips, and my primary focus is only on Siddharth Pithani. But उनमें से एक क्लिप जो मैं पहले प्ले करूंगा, उस क्लिप को अगर आप वो 3 से 4 मिनट की क्लिप मैं प्ले करूंगा, हालांकि वो पूरा इंटरव्यू है, पर अगर आप वो पहले 3 से 4 मिनट के क्लिप को सुने, you will get to know exactly what would have happened or what happened through Siddharth Pithani's own words. Now, कहने वाले बोलने वाले ये बोलेंगे कि what, ये तो do you want to trust Siddharth Pithani, or you want to go by whatever he's saying. End of the day, he was the one who was there. He was the one जिसकी statements को, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो सीबीआई हो, विल टेक इनटू कॉग्निजेंस, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके ऊपर सीबीआई की जितने भी स्टेप्स होंगे, वो सब उसके बेसिस पे होंगे. सो फॉर मी और यू और एनीबडी हु वाज नॉट इनसाइड दैट हाउस, हु वाज नॉट इवन क्लोज टू दैट माउंट ब्लैंक बिटवीन 8th and 14th, हम कोई भी स्टोरीज बनाना या थ्योरीज बनाना इज a total waste of time, plus it's disrespecting Sushant and this entire movement. So I really, exactly, Swapna ji, absolutely, and this is what I say, he knows every single thing that happened to Sushant, around Sushant, between that 8th and 14th. और ये वाली जो clip है जो मैं play करूँगा, this is an interview that he gave to maybe clear his own image. अगर आप सबको याद हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो ये सिद्धार्थ पिठानी हो, each one of them chose their own preferred platform. हर कोई अर्नब के गया और वहां पर बहुत बुरी तरह फंसा, बहुत ही बुरी तरह से फंसा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसी ऐसी चीजों पे. Now they chose their own platform of their own choice, जहां पर वो अपनी स्टोरी, अपना नैरेटिव देना चाहते थे. But end of the day, one thing is very clear, and we all have to stay focused on that. चाहे वो अर्नब के बोला हो, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म पे बोला हो, if they have said something in public domain, that will be taken against them. That will definitely be taken into cognizance by the agencies, by everybody, because उसको ये झुटला नहीं सकते, क्योंकि पूरी की पूरी एक थ्योरी, एक स्टोरी इन्होंने बताई है. This particular clip that I'm going to play right now, इसके अंदर अगर आप ध्यान से सुनेंगे, he has given some timelines as well. टाइमिंग्स के हिसाब से सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कब क्या हुआ. There have been a lot of drama on social media, Twitter पे and YouTube channels पे, people claiming मैंने यहाँ देखा, मैंने वहाँ देखा, मैंने इस चैनल पे देखा, मैंने उस न्यूज़ पे देखा, and by ये टाइम था, वो टाइम था, all that BS that has happened. This particular interview, Siddharth Pithani has very clearly stated some estimated, वो tentative timelines, चाहे वो 10 साढ़े 10 का टाइम हो, चाहे वो 1-1:30 बजे का टाइम हो, every single thing has been documented by Siddharth Pithani in this particular interview. I don't know, I may have forgotten कि पता नहीं मैंने ये पहले भी इंटरव्यू प्ले किया है कि नहीं किया, but this particular interview gives a timeline overview of what happened on 14th. हर एक चीज बताई गई है और खुद सिद्धार्थ पिठानी ने अपने मुंह से सब चीजें बोली हैं. यहां तक ये भी बोला है, एंड आप लोगों ने भी सुनी होगी ये थ्योरीज, जो हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे और बहुत सारे व्हाट यू कॉल ट्विटर पे ये बहुत ट्वीट्स देखते आ रहे हैं कि मीतू दीदी वाज नॉट देयर एंड मीतू दीदी केम लेट, एंड ही हैज वेरी क्लियरली सेड कि सुशांत को रिवाइव करने के लिए मीतू दीदी, Siddharth Pithani and few more people were there when he was on bed, even before the police came. Police के आने से पहले they were there in the room trying to revive Sushant. अब इससे ज्यादा और क्लियर मैं और चीजें खुद नहीं बोलना चाहता. I would love all of you to hear this, and I don't know how many of you already knew it, but जब मैं इस पूरे इंटरव्यू को जब मैं सुन रहा था, and I'm gonna share it on Twitter as well, because all of you should hear this.
लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। मैंने शुरुआत का थोड़ा सा वो किया है जहां पर इंट्रोडक्शन है इस इडियट का, which we all don't need. So let me just share this and play this for you. The entire incident. Thank you, Siddharth, for joining us. I really apologize. It must be triggering for you. And I'm going to make you repeat things that you might have already seen and said. You are probably the only person who can tell us exactly what happened that day. So on the night before, on the day of 30, so it all, the night was the time where I had the last conversation with Sushant sir. So I finished my work later in the night. I have a habit of working till late. So I finished my work, I came to my room. When I sat in my room, Sushant entered my room saying कि तुम अभी सोया नहीं? तो मैं उसको बोला कि सर मैं अभी सोने ही वाला हूँ, तो आप क्यों जगे हो इस टाइम पे? And he's like, I just woke up from my sleep. I go back to bed soon. And he asked me to go to sleep, and we exchanged good nights. And he went to his room. I went back to sleep. That was the last conversation I had with him. So the next morning, the events have unfolded. Like, after I woke up, things happened that day had changed my life basically. Like, lot many things happened. See, whatever that I'm gonna tell you, it will be from my perspective, like what I have seen in my own house and what have unfolded in front of my eyes. So before I let him speak, आपने ये भी सुना, these are from my perspective. There is no other perspective, idiot. To be very, fair to this jackass. And I'm sorry, मैं थोड़ा सा, I'm gonna be, using certain words, certain language which I generally don't use. But इसके लिए, ऐसे लोगों के लिए, I think it's absolutely justified. पहली बात, looks like he's come here to tell a story for sure. He's all well planned. Look at the body language, look at the way he's sitting. It looks like his camera is on the right, but on the left side, I'm sure he has all the pointers, the storyline documented, क्योंकि ये बार बार left right देखता है, वहां से कोई point miss ना हो जाए. So absolutely he has documented everything because he wanted to throw this out in public. This is not a public, like, this is not a personal conversation between two friends के जहां पर we could have some other theories. ये जानबूझ के ये वर्ड्स, ये लाइंस, ये स्टेटमेंट्स, वो टाइमलाइन सब देने के लिए आया था पब्लिक डोमेन में, because that was his intention. Now the point I was trying to make was, just because he's doing this openly, publicly, then definitely this will be the same set of evidences or timelines that even CBI will be looking at, unless कि कोई आप में से कोई वहां पर था जो सुशांत के घर पे टाइमलाइन चेक कर रहा था, या सब कुछ उसको पता है. Other than that, I don't think anybody else would know what this man is telling. So what he is coming and telling in public platform is pretty much what even the CBI will be looking at, investigating around these points. So अब इसकी आप statement सुने, very clear statements that he has given. Some of them very dubious, some of them very very like to the point. So इसका सुने जरा क्या कहता है ये. Basically, I wake up. I woken up a little late that day, like around 8, 8:30, 9 o'clock. I don't remember the exact time, but I woken up late and I directly came down. I thought I'll freshen up a bit. I like having coffee and chai a lot, so I was having my morning tea. Then after like half an hour, 40 minutes, Keshav had walked up to me and said, "He sir have locked himself from the inside, and I want to ask him what he would like to have for lunch." Then the cook, the cook asked me to Keshav. Keshav, yes, Keshav. So Keshav has asked me like to ask sir what he wants for lunch. I said okay, I'll find out. Then I went upstairs and knocked the door. If then he did not respond. Then I thought, okay, well, let's give him some space. Then I went down and I told Deepesh about sir not opening the door. And we gave him some time, and then we went again upstairs. We Who did you tell? I'm sorry, I missed that. Deepesh. Dipesh.
Dipesh is the other person in the house. He's the Basically, he's just like me, a friend of Sushant. Sushant wanted him in the house to help him out. Another lie that he's saying, see, मतलब कितनी openly ये बोल रहा है, a friend of Sushant. I think he forgot that he was not a friend. He was more like a servant or an employee working for Sushant. अपने आप को सुशांत का ये दोस्त बताने वाला, इसको इसको खुद भी इस पूरे इंटरव्यू में भी ही इज कंफ्यूज. कभी बोलता है सुशांत सर, कभी बोलता है सुशांत, कभी बोलता है स्पेस देनी थी, कभी बोलता है कि दरवाजा नॉक करने के लिए हमने टाइम लिया. अभी आगे आगे भी सुनो, his stories have definitely changed, but we'll focus on those timelines that he shared in a bit. Certainly. So, like how I was helping with the the creative aspect of it, and since Dipesh had worked in the TV industry, he has idea about production design and everything. So he could handle all those. So he was there for that. So we both tried knocking the door, and but at one point of time. Exactly. Hope, peace, trust. He said, I like to have coffee. He flipped कि मुझे चाय अच्छी लगती है. तो इससे सिर्फ ये पता लग रहा है कि इसकी जो लेफ्ट साइड पे जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर इसको सर्टेन वर्ड, सर्टेन की फ्रेजेस दिए गए हैं, तूने वही बोलना है. अब इसकी पर्सनल चॉइस क्या है क्या नहीं वो शायद पूछना भूल गए वो स्क्रिप्ट राइटर्स, बट ही वाज गिवन अ स्क्रिप्ट दैट ही इज रीडिंग आउट ऑफ. इसकी लेफ्ट साइड पे इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस वे, द राइट साइड, बट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव हिज लेफ्ट साइड पे he constant look at the rolling of his eyes, कैसे रोल करके ये वहां पढ़ने की कोशिश करता है. Just keep on reading his eyes as well. The banging was so loud, and we scoured the entire house to look for a alternate key if we can find any key, but we could not find any key. Then we banged on the door for a long time actually, because it got very loud. That in fact sound could go downstairs also. Then finally I decided, let's call the key maker and open the door, force the door open. Then meanwhile, Judy, this is an old clipping. This is an old interview where he has very clearly stated, or maybe let me just put it this way, where he was asked to clearly state certain timelines and events that unfolded on the 14th morning till 1:30 p.m. So वो सब इसने टाइमलाइन के हिसाब, टाइमिंग के साथ बताया है. So let's just hear this out. Inform the family also, the Sushant's sister, Meetu Singh, and I asked her to come start from wherever she is and reach the house urgently, since Sushant is not opening the door. So she said, okay, I will start soon. Karke, she started, and meanwhile the keymaker had come. He opened the door, and once the door is unlocked, we sent the chabi guy away. We paid him, he went away, and then I was supposed to enter the room where we saw him like that, in that state. Again, यहाँ पर we've spoken about it, but since we are doing back to basics, I'm going to repeat the same statement one more time. अगर कोई दरवाजे को लॉक करके अंदर होता है, there could be thousands of things that go in everybody's mind. पहला होता है कि चल यार शायद बहुत गहरी नींद में है, सो गया होगा, या सेकंड होगा चलो दवाई खाई होगी किसी तरह से, कई बार वो नाइकोइल या ऐसा कोई पेन रिलीवर कोई खा के सोता है, सो थोड़ी गहरी नींद आ जाती है. अगला होता है if still somebody is not opening up after so many जिस तरह की ये बोला कि बहुत लाउड बैंग्स हमने किए, इतना शोर के नीचे तक आवाज आ रही थी दरवाजे की, तो अगर इतना तुम कर रहे हो देन पैनिक किक्स इन यू कि कहीं कुछ अंदर हो तो नहीं गया, कहीं द इंडिविजुअल मे बी ही इज नॉट फॉलन ऑफ बेड, और ही इज फॉलन इन द बाथरूम, और ही इज फॉलन इंजर्ड, कहीं उसका कोई ब्रेन हैमरेज तो नहीं हो गया. आई मीन देयर आर सो मेनी डिफरेंट सिनेरियोज दैट कैन हैपन. और उसके बावजूद ये लोगों को, look at his statement, he says कि चाबी वाले से ताला खुलवा के हमने उसको भेज दिया पैसे देके, and then I was अगर ऐसा कोई सिनेरियो हम जैसे लोगों के बीच में हो, we just break the door
and we all enter in कि पता नहीं अंदर क्या होगा, and we let's just figure it out together. So इसके पास इतना सोचने का टाइम था कि चलो पहले चाबी से ताला खुलवा लिया, and now let's all get him out, उसको पैसे भी दे दो, क्लियर कर दो, और फिर बाकी हम दरवाजा पे लेट मी जस्ट गो एंड चेक कि सुशांत ऐसा क्या हो गया कि क्यों नहीं आ रहा. सो ऑल दिस इज ऑल बकवास इज व्हाट आई फील, बट लेट्स हियर हिम आउट. It must have been obviously very, very depressing, and I can imagine what it was like I never experienced another story, a rush another of, like feelings just listen to this at bullshit. that point of time. It was very scary. So at that point of time, I just remembered my mom, my parents who had already gone through a suicide in the family. Like I have seen them handle things. Catch the buzzword that he just used: suicide in the family. So what he is trying to portray here is कि सुशांत ने जो किया, that was a suicide, जो कि इस गधे के किसी फैमिली में भी किसी ने किया था, and his family, his parents have gone through or have seen that in the family, which gave him also some confidence to deal or handle this situation. Big fat liar. सिर्फ ये वर्ड यूज करना था कि ये सुसाइड, सुशांत का सुसाइड दिखाने के लिए, बताने के लिए ही इज पुटिंग और मेकिंग अप अनदर स्टोरी. ही सच, मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीजें बोला है इसने पूरे अपने इस कन्वर्सेशन में. just hear him out. Like how like one should handle the thing, and that thought gave me so much, like like think, concentrate on what should be done next. So immediately I informed the police. The first thing I did was to inform the police. They did not touch him or anything. I just checked the pulse if it's like happening, but I could not sense anything. It was cold. Okay. एक और चीज अब इसने बोली, या बोलना इसको पढ़ा या इसको कहा गया, इसने सुशांत की पल्स चेक करी. कॉमन सेंस की दुकान. पहले तो तू ये बता, सुशांत हु वाज हैंगिंग सपोजिडली, जो आपकी थ्योरी आप यहाँ पर पब्लिक में आप लेके आए हो, सुशांत तो लटका हुआ था, राइट? वो लटके हुए को आपने उतारने की जगह, आपने कुछ और करने की जगह, सबसे पहले आपके अंदर ये डॉक्टर किक इन हुआ कि पहले आप पल्स चेक करें उसके हाथ का. ये आपने डॉक्टरी कहाँ से, ये एमबीबीएस एमडी आपने कहाँ से डिग्री ली, आप वो भी बता दें. क्योंकि एज अ कॉमन पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, मैं कहता हूँ इस सिनारियो, ऐसे किसी सिनारियो में मैं होऊंगा, कोई भी होगा, द फर्स्ट थिंग वुड बी टू होल्ड द लेग्स ऑफ अ पर्सन हैंगिंग फ्रॉम सम प्लेस, टू मेक श्योर कि अगर वो इंसान गलती से भी, वो कहते हैं ना उस टाइम पे, ही हैज सम ब्रेथ, ही हैज, वो कुछ सांसें चल रही है, तो एटलीस्ट यू होल्ड हिज लेग्स एंड लिफ्ट हिम अप. कि हो सकता है कि वो जिस भी चीज से लटक रहा है वो टूट जाए, कट जाए, फट जाए, जो भी हो, और द पर्सन कम्स डाउन. ये कहाँ से आपको डॉक्टर ने सलाह दी कि सबसे पहले आप एक लटके हुए इंसान को आप उसकी पल्स चेक करोगे? सो यहाँ से मुझे, मेरे हिसाब से इट्स वेरी क्लियर कि सुशांत सिंह राजपूत was not even hanging. He was already on the bed. जिसको लेटे हुए को इसने स्टोरी में ये डाल दिया कि मैंने उसकी पल्स चेक करी. क्योंकि जब वो लटका हुआ है, सबसे पहले आप उसको नीचे लाएंगे बिफोर यू इवन चेक एनीथिंग, चाहे पल्स हो चाहे कुछ हो, सबसे पहले आप वो करेंगे. सो इसके ये एक और झूठ जो सीबीआई को भी समझना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि व्हेन द पर्सन इज हैंगिंग, इसने सबसे पहले तो एक तरफ कहता है कि हमने लोगों को नहीं डाला, ये नहीं किया, अंदर नहीं जाने दिया, एंड देन यू आर टचिंग द बॉडी ऑफ अ पर्सन योरसेल्फ, तो आपके हाथ के निशान भी हर जगह छपेंगे, तो आपने वो भी स्टोरी दिखा दी. अब अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, the theory that we had built in, that there was a fight, a physical fight that happened. In that fight, when Sushant might have hit him or beaten him, obviously इस गधे के फिंगरप्रिंट्स भी सुशांत के हाथों पे या बॉडी पे होंगे, जो इसकी
जो खोपड़ी पे जो एक एक निशान था चोट का, वो सुशांत से ही इसको ठुका होगा, सुशांत ने इसको मारा होगा, जिस वजह से इसके सिर पे जो खोपड़ी पे निशान था। तो अगर ये सब कुछ हुआ तो वॉज ही ट्राइंग टू कवर अप हिज ओन एस, कि मेरे जो हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स और मेरी जो जो मे बी मेरे बाल या मेरे कुछ भी जो सुशांत की बॉडी पे कहीं मिलेंगे, उसका पहले मैं बेस बना लूं कि मैंने इसको टच किया था, मैंने इसको फिंगरप्रिंट्स मेरे जो अगर दिखे किसी को तो इस वजह से मेरे दिखेंगे। एंड जस्ट लिसन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज वेल. It touched the body at certain times because one, I have checked for the pulse. Two, I have with the instructions of family members over phone. I have along with the case, we have cut the fabric, which was the holding the family. Yeah. So we carefully put him down on the bed, and while after we have done that, Neetu Didi has also just come while we were doing that. So while Neetu Didi have arrived, he was on the bed, and we started. So here you are. Neetu Didi had arrived and he was on bed. So basically पूरी जो थ्योरी जो नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये महाराज, वो यही है कि उनके आने से पहले पहले हम ये थ्योरी बना देते हैं कि सुशांत लटका हुआ था, वो तो he committed suicide and he was dead just because this jackass called a sister and sister might have said कि उसको नीचे उतारो, बेड पे करो, मे बी ही वुड बी एबल, you'll be able to revive him. तो इसने उस थ्योरी को यूज किया अपने बेनिफिट के लिए कि दीदी के मुंह से निकले ये चीज ताकि मैं उसको यूज कर सकूं अपनी सेफ्टी के लिए. सो दिस इडियट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जैसे मैं ये कमेंट भी अभी देख रहा था, यू आर एब्सोल्युटली राइट. Checking pulse is a common impulse of medical professionals as they do it regularly as part of examination. A common man will usually not check the pulse. मैं तो नहीं करूंगा. I mean, I have been in the medical kind of कहे थोड़ा सा मेरे को experience है, but still I would never do that. उस टाइम पे दिमाग में शायद आए भी ना. The first thing, my instinct would be, let me just hold that person from the legs, अगर कोई लटका हुआ है, to see if there is any breath or anything, and then ask somebody else if I can कि तू पहले उसको ऊपर से काट जो रस्सी है या कपड़ा है, and let's get this person down and then try to revive. Now the second thing, a very important thing that we all should know here, he has very clearly mentioned while they were trying to revive Sushant, Neetu Didi had already come there. So basically अभी तक इस सिनारियो के अंदर पुलिस का नामो निशान नहीं था कहीं. इसने एक बार नहीं बोला कि पुलिस आ चुकी थी या पुलिस अभी. आप इसके आगे सुनेंगे, then you will know when the police arrived. So there is a certain timeline that he gives, जिसके बाद, now the only person who can validate this is Neetu Didi, because per his statement he is very clear that Neetu Didi came, they were there, which is Dipesh, Pithani, and one more guy. ये 3-4 लोग ही सिर्फ थे who were trying to revive Sushant. Let's continue to hear this out. Another 1 or 2 minutes की clip है. Giving him, pumping. Just he had this hope that they might be still, he might be still struggling for breath or anything, but we have ended the knot also, but nothing worked. The sister and the brother-in-law wanted me to get the body down because they also thought he might be struggling for breath still. Like if he had, अगर हम वहीं पे चुप. Okay. Another thing, and I need your help right now. I don't know. मैंने ये नहीं सुना, मैंने नहीं पढ़ा कहीं. But this statement of his made me again go back and wonder कि मैंने ये चीज पहले कभी सुनी थी, पढ़ी थी, देखी थी. He says sister and brother-in-law.
which means कि वहां पर पुलिस के आने से पहले brother-in-law was there as well. If brother-in-law was there, why did I not, or I don't know if anybody of you seen any pictures. I saw only Mitudi. I only saw her being surrounded by Sandeep Singh. Where was the brother-in-law in that case? Basically, the question is, I'm gonna assume यहाँ पर कि while the sister was down, brother-in-law या जो भी ये बात कर रहे हैं was upstairs with the police, around the police, and he was aware of certain things that were happening. तो ये जो theories बना रहे थे लोग कि family was not aware. Family definitely was there, was before the police, and they were very clear about Pithani and his thing. But why did Sandeep Singh cover up sister? What was his intention? Why was he always shadowing Mitudi? Now, I am sure CBI के पास वो सब evidences हैं, CBI के पास सब बातें हैं where any theories that have been created on YouTube and on different channels and whatever not, those could just be theories and stories and narratives. The real picture, I still believe, is with the CBI. Exactly, Suchita, and that's what exactly, Rubal. I did not, and I would definitely be, asking those questions. I will ask, even Mitudi, what does she have to say about this statement? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से संदीप सिंह ने cover up किया हुआ था, that was something which was very fishy. Was he trying to scare Mitudi? Was he trying to do certain things? ये सोच के कि I cannot do these things or I cannot say these things to the brother-in-law, and I can maybe scare the sister, and that's why वो शायद मीतुदी को नीचे लेके आया. Because as much as I know, Mitudi is a very, very strong person. So I would love to know whether this statement of his is also a lie, कि brother-in-law वहाँ था कि नहीं था. So in case any of you are aware of anything like that, I would love to hear that from you. जहाँ तक मुझे पता है, जितने हमने video evidences देखे हैं, brother-in-law was not there. So why the hell did he mention brother-in-law? Or is he trying to put this also in front of the public domain? जानबूझ के ये डाला, brother-in-law use किया. Maybe he was trying to threaten, scare, or create some kind of hysteria around Mitudi. What was the agenda? ये मुझे नहीं पता. So no, not OP Singh ji. I'm again, I don't know the personal thing around the entire family. I don't know Mitudi ki marriage ya husband ya whatever, the personal aspect of it, and we don't have to be bothered about it. But he mentioned a brother-in-law. So ये जो brother-in-law है वो कौन है? He did not mention. Let's listen to the last. I think this is the last 1 minute. Maybe those crucial times we could have saved him. This was oak we were all in. Can you tell me the time frame when this was happening? It was around 1-ish, 1:30. Now यहाँ से last part है ये, जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कुछ time frame का. तो अब ये सारे time frame सुने. One by one he lists out all the timings. चाहे वो 10, 10:30 बजे हो, चाहे वो 1 बजे हो. Listen to that. So basically, in the morning when the cook came and told you he's not picking up the, he's not opening the door. Yeah. That was around 10:30. That was around 10:30. Yes. So you went and you tried knocking for almost half an hour. More than that. Like for an hour you tried knocking. Yeah, yes.
I want you to tell me when the police arrived and what do you think or how did the pictures get leaked? See, I think from the time the door opened, immediately the police were informed because I have seen Sushant and I have made the call or to call the police, and the police have come within like 10 minutes or so. And between for police arriving and the locksmith, we opened the door. Meetu Giti had also come. So when police have come, the Meetu Giti, me, and everybody were trying to to do whatever we could to to wake up Sushant. Like he rubbed he gave him something, and tried our best, but nothing really worked. And then police have come after that within like 10-15 minutes. The first person to arrive was the investigative officer, Bhushan Belnikar from the Bank of Police. And post that, claps, round of applause for this man. इसको दवाई का नाम याद नहीं, इसको सुशांत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें याद नहीं, बट इसको इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो इस केस को और चलो लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, एक्चुअली लेट मी मेक इट इवन मोर सिंपलर. अभी तो पुलिस आई है बेटा, तुझे अभी से ही कैसे पता लगा कि जो आईओ है वो ये है? सो he gave away something very stupidly by this statement of his कि इसको उस पुलिस ऑफिसर जो कि सपोजिडली बाद में इस केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बना, इसको उसका नाम तक पता है, बांद्रा पुलिस स्टेशन से आया, which makes me believe very clearly, and again I could be wrong, but I personally believe he was absolutely sure about every single thing happening. कौन आएगा, कौन पुलिस वाला होगा, उसके साथ क्या बात किस तरह करनी है. अर्नब के साथ भी इंटरव्यू में इसने यही चीज बोली थी कि I was thoroughly investigated by the police, मुंबई पुलिस. और उस पे अर्नब ने इसको एक sarcastic taunt मारा था, oh you are giving a clean chit to Mumbai police. So let me Saranjay, she was not the original Meetu Didi. अरे यार सरनश्री जो भी आप हैं, please, we are away from all those stupid things. Please do not do that. I think there were Sandeep Singh and few other people also arrived, right? When did they come? They have come in like I think by 3:34, because there's so much happening. I have no idea like who is coming in and at what time they have come. But the very ये मैंने इसलिए रिपीट किया, जरा ध्यान से देखना. This reporter asks a question and Mr. Pithani is looking at the screen कि कहीं मैं कोई गलत टाइम ना बोल दूं, तो पहले मैं आंसर पढ़ लूं कितने बजे मुझे बोलना है संदीप सिंह के लिए. 10-15 minutes. The first person to arrive was the investigative officer, Bhushan Belnikar from the Bank of Police. And post that, I think there were Sandeep Singh and few other people also arrived, right? When did they come? They have come in like. हाँ, यहाँ पर they come in, they have come in at. तब तक फटाफट मैं उस स्क्रीन पे देख लूं कितने बजे बोलना है. I think by 3:34, because there's so much happening. I have no idea like who is coming in and at what time they have come. But the very weird thing which had happened is so irresponsible of the people who are taking the picture. See, who are taking pictures? I want to know that. The police, the department people who are taking the pictures. We did not dare to, take the picture. They were not in that frame of mind. Okay, to take picture. So from the family, there was Meetu Singh and the brother-in-law, right? No, only the Meetu Singh. Only Meetu Singh is there from the family at that point of time. But later on, one by one, they started. So यहाँ पर अब ये मीतू सिंह अकेली रह गई. कहाँ गए वो ब्रदर इन लॉ?
क्यों बोला था ब्रदर इन लॉ का पहले? अब सिर्फ मीतू सिंह रह गई फैमिली में से. So you know, they took some emergency because they took the next flight and they have come by plane. So in that day, Deepesh, the Sushant's sister, Keshav, Neeraj, and the police inspectors were all there around. Again, I think it's really unfortunate what happened. Were you also disturbed by the images that were circulated, which I think were extremely wrong? Yes, it was wrong. It was very irresponsible of them. They should have thought about it before, like even like sharing it with their friends, because. all right. तो एग्जैक्टली दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कहे या सबसे बड़ा फेकस्टर कहे या इसको जो भी कहे, this guy, exactly, he was not there. There was no brother-in-law. It was just Meetudi all by herself. इसने ये क्यों स्टोरी बोली, क्यों इसने ऐसी चीज बात करी एक लाइव पे, नॉट इवन लाइव, दिस इज अ रिकॉर्डिंग सेशन, यू कैन सी इट्स ऑल एडिटेड एंड ऑल. वहां पर इसने बोला कि ब्रदर इन लॉ. सो यू नो ही वाज इतना खुद भी कंफ्यूज था एंड ऑफ कोर्स इस सबको भी कंफ्यूज कर रहा था. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही मेंशन्ड वाज बिटवीन 10 and 1 सब कुछ. अब उसके अंदर भी आप ये देखें, ये बोलता है कि मैं 8 साढ़े 8 बजे उठा और उसके बाद 10 बजे कहीं जाके इन्होंने दरवाजा खड़खड़ाना शुरू किया, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा. उसके बाद 10 से 1 के बीच में चाबी वाला भी आया, दरवाजा खोला, सिस्टर भी आ गई, पुलिस तो आई नहीं. पुलिस को चाबी खोलने से 10 मिनट पहले उनको बताया गया. पुलिस केम इन एंड सो ऑल दिस बॉच अप दैट ही इज डन इन दिस इंटरव्यू, जो स्टोरीज जो नैरेटिव फेंकने के लिए. अब द प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ दिस इज these statements will be the ones which will hold any value in front of CBI, because जो वहां पर है, जो वहां पर जिसने देखा, जिसने जो statements दी, they will try to match it up. Of course they will try to match it up. They will ask Dipesh the same question, they will ask Pithani the same questions, they will everybody the same set of questions. Even मीतू दी से भी यही क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आप कितने बजे आए, आपने क्या क्या देखा, कौन कौन था, आपने क्या कहा, किसी को फोन पे किसी को ये कहा, वो सब चीजें सीबीआई पूछेगी. The theory he was trying to make was this idiot Sandeep Singh came at around 3:30. अरे भाई साहब 3:30 तक तो एम्बुलेंस जाने का टाइम हो चुका था और जरी गई थी एक्चुअली. So what are you trying to say? बॉडी ऊपर से नीचे तक आने में ही हमने देखा it took them a while. and वो वहां कितनी देर सिस्टर के साथ बाहर खड़ा था. तो maybe he was not aware, is the benefit of doubt I can give to this jackass, but he did not know anything and he was trying to give a clean chit, indirect clean chit to even Sandeep Singh, कि संदीप सिंह जो था वो 3:30-4 बजे के अराउंड आया. So all this is so much BS. Unfortunately, CBI will take all of this. Now, I hope and I wish and I pray कि किसी तरह थर्ड डिग्री हो जिसके वजह से सच बाहर निकल के आए, क्योंकि अगर ये सब बकवास ये करेगा CBI, and if all of them do the same kind of botch up theory and stories, then it is really very, very sad and heartbreaking to see how these guys have made such nonsensical stories, and CBI will investigate based on that. I just hope there are other evidences that have been saved by using two fingers. How Sushant Singh, again, Nishwat ji, मैं ये कहूँगा, I personally do not believe, and that's my personal take. Please, I am not saying, I'm not the court, I'm not the police, I'm not the IO, I am not the CBI, I am nobody. Based on what I have seen, the photographs and all, Sushant was not hanging. He was never hanged. उसका गला चोक करके with whatever leash कहें या जो भी कहें, उससे उसको मारा गया है. He fought for his life. He fought with all the idiots, all the criminals. कईयों को ठोका होगा उस टाइम पे, ये पिठानी के तो सिर पे दिख ही रहा था, और भी कुछ लोगों को होगा, because सुशांत को
it was not easy to bring this man down by one, two, or maybe three people. It was a combination of about 5 to 7 different people. सब लोग मिलके उन्होंने इसको पहले, वो कहते हैं ना, with maybe, again I don't want to put everything down, but basically maybe that shotgun was used, that the taser gun, to immobilize Sushant, because उनको पता था कि अगर सुशांत को इमोबलाइज नहीं किया गया तो वो जो बर्न मार्क्स थे या जो पिन मार्क्स थे उसकी वजह से ही बिकेम अ लिटिल वीक टू फाइट. उससे पहले बहुत फाइट हुई होगी, बहुत सारे लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की होगी, क्योंकि सुशांत was such a athletic person, was such a strong person. Looking at his physique, looking at his muscle, at his agility, he would have easily, 4-5 लोगों को तो पकड़ के मार के भाग सकता था वहां से. He would have easily. तो इन लोगों ने बहुत ही सब कुछ बंद करके, दरवाजे एंड whatever noise ये वो करके, हो सकता है they might have done a lot of loud noise as well. It was all a very planned activity. Exactly. वो तो स्कार्फ तो लटकाया गया होगा, राइट, दिखाने के लिए ऑब्वियसली, और उसको काटा गया होगा, क्योंकि जिस तरह से बताया था इस पिठानी ने कि जिस चाकू से काटा, उसको सिर्फ यही कि कपड़ा टांग दिया और उसको काट दिया नीचे से हाथ से पकड़ के, ये दिखाने के लिए, और उसी कपड़े को फिर बांध दिया गर्दन पे, और हमने वो देखा भी था. Anything is possible. Now, before I kind of share anything else, let me just play this thing. And viewers, this is a breaking news broadcast. Siddharth Pithani, this is Arnab Goswami here. Can you hear me? Siddharth, this is Arnab Goswami here. Can you hear me? Yes, sir, louder. Yes, आप मुझे सुन पा रहे हैं सिद्धार्थ? मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपसे सवाल करूंगा. हमारे दोनों चैनल रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आप इस वक्त लाइव हैं, तो आप मेरे सवालों का जवाब दें. आप कैमरे की तरफ देखें और सवालों का जवाब दें. आप कब से कब तक, कितने दिनों तक आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे? हाउ लॉन्ग वर यू विद हिम? From April 2019 until July 5th. आप उनके घर में रहते थे? I was there with 1 year. Yes. आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि आप you are saying that you were there with him for 1 year. 1 साल तक आप थे? Yes, I was there. I was with him for 1 year. घर में रहते थे? Yes. सब कुछ जानते थे उनके बारे में? हाँ सर, जो कैपेसिटी में मैं इनको जानता था एज अ फ्रेंड एंड प्रोफेसर. घर में रहते थे ना, तो घर में जो हो रहा था सब कुछ पता था. क्या उनकी कोई मानसिक बीमारी थी? सर, I wish I know what he was going through. नहीं, I wish I knew मत बोलिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. ये बोला जा रहा है, सुनिए, आप पहले डरिए मत. डोंट बी स्कैर्ड. Talk आराम से. I'm saying to you, you were living with him in his house. Everybody says that he had some major mental illness. Did he have a major mental illness? Major mental illness, I don't know what to call it. What do you mean? There was a psychiatrist involved. There was medication involved. Who was giving the medication? Who was giving the medication? Yeah. There was a prescription. Who was giving the medication? Who was giving him the medication? The trainer spoke to me, Sami. You know the trainer, Sami. I myself. You were giving the medication. Yeah, I met him. You were giving the medication. I gave him. I used to take 2 tablets. Yes. What tablets? I have no idea. So there is a prescription. No, how do you have no idea? There were 2 tablets. Who gave you the tablets? I have no idea. So there is a prescription. The doctor, Karsi Chavda. Oh, no, one sec. Sami, his trainer told me that the tablets were procured by Ria. Yeah. Right? That's the fact, right? So Ria got the tablets and gave it to you to give him. Okay. Go on. See, we have a prescription. No. One minute. Answer my question. Answer my question, Siddharth. Answer my question, Siddharth. Keep focused on the question.
look at every word of the question. हर एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे. मैं सवाल का अगला ये पूछ रहा हूँ कि उसके ट्रेनर, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों चैनल्स पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसके ट्रेनर ने स्टिंग ऑपरेशन में हमें कहा कि रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी. आप कहना है कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उसको देते थे जी. रिया लाती होगी सर, क्योंकि होगी क्या? जब लाती होगी का मतलब क्या है? बात होती थी रिया आप नहीं एक मिनट रुकिए. व्हाट यू मीन लाती होगी? आप दुकान से खुद लाते थे कि दवाई लाई जाती थी और आप उसको देते थे? नहीं, लाई जाती थी. कौन लाई जाती थी? रिया लाती थी. नहीं सर, रिया नहीं पर्सनली नहीं लाती. तो आप लाते थे? How would she go to the medical shop? आप लाते थे? Used to go to the medical shop. आप लाते थे? Only the people who are helping Sushant. नहीं सर, मैंने तो मुझे ये बताइए, अगला सवाल मेरा ये है. लिसन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 तारीख, सोच समझ के जवाब दीजिए. 8 तारीख और 14 तारीख के बीच में कौन कौन घर में आए थे? हाँ, 14 के बीच में सिर्फ उनकी सिस्टर आई थी सर. नहीं, वो तो 12 तारीख को आई थी ना. हाँ, उनके सिस्टर ओनली हैड कम टू द हाउस टू मीट सुशांत. एक दिन पहले उनके घर में कोई पार्टी हुई थी? कौन कौन आए थे? नहीं सर. कौन आए? नो पार्टी. कौन आए? नो पार्टी. कौन आए? सिर्फ हम लोग ही थे. कोई नहीं. हम लोग घर में कोई नो पार्टी. हम लोग नो पार्टी. नो पार्टी मींस व्हाट? आपको किसने बोला है नो पार्टी? मैं no party happened. We just finished our work and we went back to sleep. That's it. एक मिनट. And I was there. Deepesh Sawant was there. हाँ. एक मिनट बताइए, रिया चक्रवर्ती ने घर क्यों छोड़ा 8 तारीख को? 8 या 9 तारीख को कब छोड़ा? जब भी उन्होंने I can't recall the date exactly. What date she left. She left. हाँ, जब घर छोड़ा. क्यों छोड़ा? She had spoken to me. What did she tell you? She had told me. What did she tell you? मुझे नहीं पता सर. आपको कैसे? What are you saying? What are you saying? You just told me she spoke to you, and then you are immediately responding by saying नहीं पता. एक मिनट, आप मुझे फिर से बताइए. She spoke to you. What did she tell you? हाँ. What did she tell you? Yeah, she spoke to me. What did she say? Take care of him. She told me, take care of him. I am just a phone call away. Whenever you need me, just tell me. I'll come back. That's all. That's all. I said okay, fine. Then she left the house. That's all. Yeah, nothing else. Bas. Yeah. Now what happened? Why did she leave? I don't know. But they had a personal conversation. We were downstairs, they were upstairs, so there's no means that we can know what conversation. So what was happening? What was the circumstances? What happened before that when she left? Circumstances were quite normal, actually. Like, only thing is, they were spending a lot of time having conversations in their own house, on their home, in their privacy, and I have no idea what conversations they had. आप सोचिए, आप उस घर में थे. You were in the house. You are saying you know nothing. Siddharth, nobody will believe you. Yeah. You say you lived in the house. You were in the house. Okay. Right? You were in the house in the entire period. You were. Wait a minute, Siddharth. Siddharth, listen. Don't try and give me these wishy-washy replies, okay? Yes. You were in the house when he died. You were in the house when Riya left. You were with him throughout. You are updating his social media profiles. If there is anybody who knows everything, it is you. You are coming on my program and saying, I know nothing. Yeah. Your basic agenda is to say that you knew nothing. See, I'm not updating his Instagram profile. I was updating my own Instagram profiles. No. You are saying you knew nothing. Yeah. I know nothing, sir. Yes. What conversation they had? So what why happened between Riya and Sushant? One second. Because since I respect their privacy, I never asked them what happened. So you know nothing. Were you interrogated by the Mumbai police? I know.
Yes, thoroughly. Thoroughly. You are giving the Mumbai police a clean sheet. Interesting. What happened on 14 June? Tell me. Okay. You know, you worked with What him. happened Have some on 14 sense. June? Yeah. No, Siddharth, So, listen. in the morning, Siddharth, I- listen. You worked with him. You lived with him. Just because he's no more, you can't turn around and say, I know nothing. Tell me one thing. Was he, the theory being put out there is that he was a depressed man. ये बोला जा रहा है कि वो बड़े डिप्रेशन में थे, इतने डिप्रेस्ड व्यक्ति थे. एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए. ये बोला जा रहा है कि वो डिप्रेस्ड व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपनी जान ले ली, आत्महत्या थी. मगर आप जो मुझे कह रहे हैं कोई डिप्रेशन था नहीं. आप बोल रहे हैं 2 दवाइयां आपको याद नहीं है जो रिया चक्रवर्ती उसको देती थी. मैंने आपको नहीं बोला ये. क्या वो डिप्रेस्ड व्यक्ति सर आप मुझे Was he a depressed man? I am asking you whether he was a depressed man. Personally कैसे? I am asking you whether he was a depressed man. हाँ. Did depression set off suicide? He was. कट गया. No, you're not running away from my program. Give him back the phone. Viewers, he's running away. Viewers, Siddharth does not want to answer the questions. He does not want to answer the questions. This is extremely suspicious. Can we put the phone back in his ear? Here is a person, सब कुछ जानते हुए भी अनजान होके इंटरव्यू उन्होंने बंद कर दी. And this man has gone to Hyderabad. I am asking him some very straightforward questions. He should take the questions. The line is not cut. I want him to come back. There are serious questions which need to be asked here. He says he knows nothing. What I understood so far is, I know nothing. But he does admit that he gave the medicines. ये कह रहे हैं कि इन्होंने दवाई दी, मगर कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं. और जब डिटेल्स में कोई सवाल कर रहे थे, जब मैं पूछना मैंने शुरू किया कि 14 तारीख को क्या हुआ, तो इन्होंने बात करनी बंद कर दी. सब कुछ जानते हैं मगर जवाब नहीं मिल रही अभी इधर. इसके पहले काफी सी एक सेटअप, एक स्टेटमेंट दी है इन्होंने. I don't know. I'm out of words, but this was. हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ है. There was a little lag. तो lag की वजह से there was always this back and forth. So जितना मैंने सुना, जितना मैंने समझा, उसमें सिर्फ इतना था कि obviously he said he did not know anything regarding the conversation that might have happened between Riya and Sushant before Riya left. उसके लिए उसने बोला था. तो वो थोड़ा सा confusion लगा इस इंटरव्यू में, वो which is absolutely visible to everybody. तो इसलिए मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है. But most importantly, he is giving medication जो कहाँ से आती है, कौन दे रहा है. He was not bothered about that. But Sushant जब supposedly इसी की लैंग्वेज में लटका हुआ था, तब ये डॉक्टर साहब को उसकी पल्स देखने का ख्याल आ गया था. तो भाई साहब, अगर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े आप कॉमन सेंस आप में है, तो आप दवाई देने से पहले यहाँ पर I'll give you a very basic example. कभी किसी का सिर भी दुखता है या हेडेक ऐसा होता है कि यहाँ यूएस में जैसे टाइलेनॉल होता है, इंडिया में क्रोसिन दे देते हैं या डिस्प्रिन पहले देते थे या जो भी चीजें, तो वो भी कोई लेने से पहले भी पूछता है कि भाई तू क्या दवाई दे रहा है. यहाँ पर देने से पहले भी हम देखते हैं अच्छा हम क्या दे रहे हैं. कहीं गलती से हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का मैं बोलता हूँ, टाइलेनॉल में एक वर्जन मिलता है पीएम और टाइलेनॉल का मिलता है रेगुलर वर्जन. सो इफ यू आर गिविंग टाइलेनॉल, दोनों पार्टीज एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई कहीं तू टाइलेनॉल पीएम तो नहीं दे रहा कि कहीं मैं ज्यादा लंबी देर के लिए ना सो जाऊं, कोई ज्यादा ना हो. सो एंड अगेन वी समटाइम्स आल्सो चेक ऑन द मिलीग्राम कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है. सो यहाँ पर आप दवाई दे रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस सपोजिटली टू समबडी जिसको डॉक्टर भी आपको पता है, डॉक्टर का नाम भी आपने ले लिया, आपको ये भी पता है वो डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हैं, आपको सारी चीजें ये वाली पता है, बट आपको ये नहीं पता लगा कि वो दवाई कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है. हेल्पर आपको कुछ भी दे देगा तो आप एक स्टार, सपोजिटली आप एक स्टार के घर में रह रहे हो, स्टार के साथ रह रहे हो, स्टार को आप एक दवाई दे रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि वो दवाई किस चीज की थी, आप कुछ भी दे दोगे, उसके मुंह में डाल दोगे. All these lies have been completely exposed. This loser, and that's why I called him conspirator number 1. Anyways, तो जस्ट मैंने कहा था we'll limit this, but yes, hello विशाल and hello सुनीता जी. बोलो विशाल, क्या कहना चाहते हो अपने फेवरेट चप्पल चोर के बारे में? Hello Varun.
Hello, Sunitaji. Hello, everyone. Yeah, of course, his name is चप्पल चोर. शंकर चप्पल चोरी करता है साला भिखारी. औकात तो है नहीं खुद का चप्पल खरीदने की. Yeah. And Arnab shirt, okay, left, right, and center. That was amazing to watch. And his answer, one statement. I know nothing. तो बच्चों को मालूम क्या है भाई? तो घर पे रह भी रहा था कि नहीं रह रहा था? I know nothing. So यहाँ इतना फंबल कर रहा है ये. Lord knows what he must have done in front of CBI. वहाँ पे तो भाई की पैंट के लिए हो गया. I'm sorry for my language, Varun, but पैंट के लिए हो गया वहाँ पे सीबीआई के सामने क्वेश्चन आंसर स्टेशन हुआ रहेगा. And in one of his interview with Navika, when she was asking this Chappal Chor the name of the medicine and all, then he was saying Q-tip in. I only remember one medicine, Q-tip in. That's it. Second medicine का नाम नहीं लेते हैं भाई साहब. वो Q-tip को उसको किसी ने ना मार मार कर रट्टा दिला याद दिलाया होगा भाई. एक तो दवाई सही से बोल दे तू. क्या इंटरव्यू दे रहा है कि मजाक कर रहा है तो एक दवाई का नाम दे दे. You are giving medicine. You don't know what medicine you are giving. Nonsense. That's true. And he so-called Sushant had hired him for videography and for whatever for Sushant. He was Sushant's servant, but videos तो सिर्फ वो रिया के निकालता था बाबा. सुशांत का एक भी पोस्ट नहीं किया उसने या कुछ सुशांत के लिए करेगा सब तो रिया के लिए कर रहा था वो. सैलरी कोई और दे रहा है, सर्विस किसी और को दे रहा था भाई साहब. आई नो, चाहे वो एक्सरसाइज की हो कोविड के टाइम पे, जो भी हमने सब देखा. पिठानी वाज द स्टार ऑफ फॉर रिया चक्रवर्ती, जो उसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, क्लिप्स, फोटोग्राफ सब अपलोड करता था. और कई हमने देखे ऐसे रिया चक्रवर्ती के ट्वीट्स. And also, Varun, in one of the same in debate, when on the panel, I think Ishkaran Bandari and all were also there. When they were asking him, what is Sushant Singh Rajput's height and what is your height? I'm 5 something, and then Sushant is 5'7", 5'8". अबे साले कितने 5 महीने 6 महीने 8 महीने कितना टाइम रहा तब तो सुशांत के साथ. You don't even know that his height is 183 centimeter, that is 6 feet, and you're saying 5'7", 5'8" as his height. Correct. Bloody चप्पल चोर. And he's saying मैंने बॉडी लटकी हुई देखी, मैंने अकेले बॉडी नीचे उतारी. डूड, तो जब एम्बुलेंस में जब बॉडी रख रहे थे तो वहां पे 8 जन क्यों लग रहे थे बॉडी को लेके जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए, और तूने हैंगिंग बॉडी अकेले उतार दी. इतना बड़ा बिल्डर है क्या भाई तू? मेरे को उठा के बता ना, मैं 105 हूँ, 25 किलो ज्यादा हूँ सुशांत से. मेरे को उठा के बता, हिम्मत है तो. नमूना. I know. Good is that he's still behind the bars, and I'm damn sure he has said each and everything to CBI. Of protection में ही अंदर, I'm damn sure. Because the charges against him, charges against Chudel, charges against Aryan Khan were almost same in fact. So बाकी दो लोग तो बाहर आ गए because they had the best of the lawyers. But ये भाई साहब तो अफोर्ड नहीं कर सका था वैसे lawyers, तो भाई साहब अंदर ही है. But कर भी लेगा कितने भी लॉयर अफोर्ड, वो अंदर ही रहेगा because I'm damn sure he is in protection because he is vomited everything to CBI. If I correctly remember, he was supposed to become an approver and he was taken to CBI headquarters all alone. None other people from the house who were there that time were taken to BKC's head office of CBI, but this fellow was taken as per Republic that time when the case was there in media. So I clearly remember this. So I'm damn sure this fellow has spoken everything, because if we see the videos when CBI had come to Mount Blanc, if they wanted to investigate this as a suicide theory, they would have just gone inside the room where the dead body was found. But we didn't saw anything of that. But we saw the CBI going on the terrace, opening the tank and everything. That's there on public domain. Everybody can see that. Damn sure CBI knows anything and everything regarding this case. We're just waiting for them to give that 302, and then the court trials will definitely begin soon. That is for sure. In fact, I pray before 10 July only 302 ho jaye, so that the family, Priyanka di, Miku di, Papa, किसको तकलीफ ना हो करना पड़े कोर्ट जाके and asking court to give CBI to give an update what's going on with Sushant's case. So I hope before 10th July, before 11th July, in fact, the court will reopen Supreme Court. 302 should be filed by CBI. Fingers crossed for that. If not, I'm damn sure everyone knows. Priyanka has already said that she's going to go to Supreme Court. It's now high time where
they haven't got any updates from the CBI, the best agency. That is the reason why the case is being given to them. So definitely 302 will be filed for sure. Thank you, Arun. should be thank you and आज इसकी बेल की हियरिंग है. I am really looking forward कि देखते हैं आज क्या पता लगता है. So that's what I'm sharing on the screen कि आज बेल हियरिंग है 4 जुलाई और आज hopefully we will hear the same good news that his bail has been rejected. So let's keep our prayers on and let's keep our fingers crossed. Hopefully we'll hear this today. So thank you Vishal. Hello Sunita ji, please go ahead. क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार वरुण सर. विशाल हाय. नमस्कार जी. हेलो सुनीता जी. सर कैसा है पता है, इस कुत्ते को है ना सब पता है. बिल्कुल. हाँ, ये जो कुत्ता है ना, हमारे जैसे पब्लिक को बॉम्बे में कोई 2-4 गेस्ट घर में बढ़ जाते हैं ना तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. ठीक है, इन बेशर्म. अभी आप बोलेंगे आप मैम ऐसा लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो, बिकॉज है ना बॉम्बे जैसे शहर में इस बच्चे ने इन लोगों को दिल से अपनाया था. पहले तो उसने इन लोगों को अपने दिल में जगह दी, फिर घर में जगह दी. तो इन कुत्तों को शर्म आनी चाहिए कि जिसने अब हमको खाना पीना, टाइम पर सैलरी, हमको फैमिली की तरह ट्रीट किया. हाँ, उस बच्चे के पीठ पीछे आपने इतने सब कांड करके उसके ही पीठ में खंजर खोप दिया. आपको शर्म आनी चाहिए. आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी. Exactly. और टाइम है ना, ये टाइम का पहिया है सर. टाइम है ना, ये पूरा जग है ना, गोल है, राउंड है, तो वो वहीं पे आएगा और इन लोगों को अपने कर्मों की, पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए. एनी हाउ. बिल्कुल नहीं, वो तो करनी पड़ेगी, वो तो कोई डाउट ही नहीं है. और हमने देखा है सुशांत की खुद ही जो स्पिरिचुअल पावर्स, जो एनर्जीज हैं, वो किस तरह से एक एक करके, मैंने बड़ी बार ये लाइन बोली और मैं आज फिर बोलता हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया से बाहर हूँ और यहाँ पर भी मैं बैठ के यही देखता हूँ कि कई बार मैं बोलता हूँ कि इंडिया में बहुत मुश्किल है पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों को किसी भी तरह से पॉलिटिकली कहो, डिफरेंट एजेंसी से कहो, पुलिस से कहो, उनसे पकड़वा के जेल में डालना. ऐसा लगता है कि पैसा और पावर अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो इंडिया में. बट लास्ट के ये 1 साल में जो हमने चीजें देखी, कमिश्नर, बात कहना चाहूंगी. इस सॉरी, मुहिम में कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं. तो हमको कुछ लेना देना नहीं है किसी से. हमारा खुद का इसमें कुछ स्वार्थ नहीं है. हम 1 डे से ही इस मुहिम में जुड़े हैं और जब तक जस्टिस नहीं मिलता है हम लोग लगे रहेंगे. और अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा. ये सब चलता ही रहेगा. वही मैं आई एग्री. इस मूवमेंट से तो बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में कभी और भी बात करेंगे. बट मैं सिर्फ यही कह रहा था कि किस तरह से वो पावरफुल लोग हमेशा बच जाते थे, बट लास्ट के साल में हमने देखा किस तरह से पुलिस कमिश्नर, मुंबई का पुलिस कमिश्नर भगौड़ा बना, किस तरह से वो कस्टडी में है. मुंबई, महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर जेल में सड़ रहा है. और ऐसे कैसे पावरफुल लोग जो हैं, एक हमने हमारे जमाने की अगर मैं बात करूं, किसी मेरे जमाने में एक लालू प्रसाद यादव जैसे वो चारा घोटाले को ही जेल में डालने में सालों साल लग गए थे. यहाँ पर तो 1-1.25 साल में हमने ऐसे ऐसे नाम सुन लिए जो सब जेल में घुस चुके हैं और जेल में बैठे हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं वहां की, जो हम सोच भी नहीं सकते थे. सो एक बात सर, मैं एक बात बोलूं, जिस दिन इन लोगों ने ये सब कांड किया ना उस बच्चे के साथ, सीरियसली बोलती हूँ, जो 4 लोग हैं ना, मैं बोलती हूँ 4 भी नहीं, इसमें से एक भी मुंह खोल देगा ना, हाँ, एक भी मुंह खोल देगा ना, तो केस देखो सॉल्व होने के लिए टाइम नहीं लगेगा. बट इनकी है ना अंदर की आत्मा है ना सबकी मर चुकी है. एग्जैक्टली, सही कहा आपने, आत्मा तो मर ही चुकी है. और वेरी सैड. आपने वो जो एक चीज बोली ना, बच्चे सुशांत एज अ अपने फैमिली मेंबर्स की तरह, उसने कभी, मैं ये भी स्टोरी सुनता था, हमें कई लोगों ने सुनाई, कई लोगों ने बताई, वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं इस बारे में, किस तरह से सुशांत वाज सो सिंपल. अपने जो कपड़े होते थे
उसके ये सर्वेंट्स, उसके जो खुद के घर में काम करने वाले, वो भी पहन लेते थे, ऐसा था सर वो। ये चीज नोटिस करो, वो बेगर्स के साथ भी जो बलून पकड़े हुए हैं, Yep, हाँ, वो yep. वो फोटो खींचने के लिए वो बच्चा कभी ये तेरी स्मेल आ रही है, तेरी गंदगी है, तेरा ऐसा है वैसा है, और ये साले जो छेल थाली में छेद करने वाले लोग हैं, ये उन लोगों के मोबाइल फेंक देते हैं, लोगों को धक्का देते हैं, वो बेशरम। उन लोगों में कुछ मानवता नाम की चीज, ये जो बॉलीवुड का हाल हो रहा है ना, ये सब वो आत्मा की बद्दुआएं है, इतना याद रखना। और ये इतनी प्योर सोल है ना, वो किसी को छोड़ेगी नहीं, इसके लिए आज ये सबकी हालत है। ना आप साउथ इंडस्ट्री में जा रहे हो, ना आप मराठी इंडस्ट्री में जा रहे हो, कोई आपको खड़ा करेगा नहीं। आई एम टेलिंग यू सर, क्योंकि हमारे भी जो बद्दुआ है ना, सबको लग चुकी है। और मैं एक बोलती हूँ सर, ये जनता की पावर है। अर्नव सर को जिस तरह से ये लोग खींच के लेके गए थे ना, हाँ, जनता की पावर देख लिया, अर्नव सर को कैसे बाहर निकाला है लोगों ने। हाँ, तो हम ये जस्टिस मिलने के लिए ना, हम इस मुहिम में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। विशाल को पूछो, मैं भी माउंट ब्लैंक गई थी, मेरा कमिटमेंट था, मैं आऊंगी। भाई ऐसे कैसे आप किसी के भी बच्चे को मार दोगे, और लोगों को शर्म कैसी आती नहीं है। हाँ, आज किसी का बच्चा गया है, कल का नंबर आपका हो सकता है, सोचो, थिंक अबाउट इट। एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल सही बात है। आज से 2 साल पहले जब जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, और जैसे जैसे ये इसके बारे में थोड़ा पता लगने लगा कि यार ये सुसाइड नहीं है, सुसाइड नहीं हो सकता, आई थिंक इट वाज अ अवेयरनेस जो पूरी दुनिया में हुई है। लोग कहीं पर भी बैठे हैं, मैं यूएस में हूँ, लोग कनाडा में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे हैं कि वहां पर भी लोग ये शर्माती है, उन्हें डरते हैं वो, कि यार आज ये एक इतने टैलेंटेड, इतने ऑनेस्ट बच्चे के साथ हुआ है, कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर आज नहीं हम उठे, आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो कभी नहीं उठेगी। और हमेशा हमारे जैसे लोग, वो एक मिडिल क्लास फैमिली, एक ऑनेस्ट, एक डेडिकेटेड अपने प्रोफेशन के लिए जो लोग होते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, वो हमेशा दबता ही आया है, दबता ही रहेगा। और इस तरह से आज की डेट में कितने लोगों को हमने सुना, चाहे वो मनसुख हिरेन हो, दिशा सालियान, जिया चक्र, मतलब जिया खान का तो मैं सोच के कि कैसे एक आउटसाइड ऑफ इंडिया पली बड़ी लड़की, उसने इस इंडस्ट्री को अपना एक घर समझा, यहाँ उसने सोचा करियर बनाएगी, और शी वाज डूइंग प्रिटी वेल, और कैसे उसको ब्रूटली खत्म उसको भी कर दिया गया। और वहां पर भी मैं कहूंगा जिया की भी वही पावर्स हैं, वो स्पिरिचुअल पावर्स, जिस वजह से वो जो किलर है पंचोली, उसका करियर कभी भी चला नहीं, चाहे उसको बड़े बड़े लोगों ने। बहुत है ना, हम भी एक माँ है किसी की, ठीक है, हमारे भी 2 बच्चे हैं, बहुत दुख लगता है ये सब सुन के और देख के। अरे जिया खान के केस में तो प्रूफ है, पूरा सीसी कैमरे में पूरा सब सब दिया हुआ है, फिर भी आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो। उसके उस बच्चे की माँ आज 8 साल से फाइट कर रही है। हाँ, शर्म आनी चाहिए। सब कुछ होने के बाद आंखों के सामने आपके पास प्रूफ है, फिर भी आप बोलते हो। अरे विटामिन एम है ना, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं चलता है, पैसा आज है कल नहीं, लेकिन सच्चाई सामने आके रहेगी। बिल्कुल, बहुत 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 पावरफुल वर्ड्स थे, बहुत अच्छा लगा आप सुनीता जी, आपको सुन के। ये वर्ड्स बहुत जरूरी थे। और मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था, लाइटर नोट पे आपने कुत्ता बोला, सबने कहा कि सुनीता जी, कुत्ता बहुत वफादार होता है, इसको कुत्ता मत बोलो पिठानी को, ये तो कॉकरोच है। मैं ऐसे लोगों को सुअर बोलता हूँ। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं सर, अगर उस दिन सुशांत का वो नाम क्या है, फज, वो बहुत वफादार होते हैं, आई एम टेलिंग यू। अगर वो वहां पे होता ना, तो एटलीस्ट वो रोर करता, ये भौंकता, कुछ ना कुछ होता, क्योंकि क्योंकि उनमें वो ताकत क्षमता होती है कि अपने मालिक के प्रति वो वफादार होते हैं, और उनको कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इन हरामजादों ने पहले उसको गायब किया है। अरे ठीक है, हाँ, गाली थोड़ा सेशन पे ध्यान, बट आई कैन नाउ अंडरस्टैंड, मैं आपकी इमोशंस और इस वाइब को मैं फील कर पा रहा हूँ। और आई थिंक दिस वाज द रीजन, यही रीजन था जिस वजह से मैं ये वाले सेशंस ऐसे करना चाहता था, क्योंकि चाहे वो पिठानी हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो
महेश भट्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, इन सब के लिए इसी तरह से बात करना बहुत ज़रूरी है। इनको ऐसे ही बार बार याद करके इनको गालियां देना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली ग्लोरिया, दैट्स व्हाट आई सेड कि आई रियली डोंट माइंड। आई डिड नॉट, अगेन मैंने किक नहीं किया, वो अपने आप निकली है, मैं पहले बता दूं, ये ना कहना कि मैंने कोई किक किया। आई थिंक शी ड्रॉप्ड ऑफ, बट ये जो इमोशंस हैं यही जगाने के लिए हम ये सेशंस कर रही हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ आयुष भी ज्वाइन किया। यस आयुष, प्लीज बोले, क्या कहना चाहोगे आप? नमस्ते सभी को। और ये जो इंटरव्यू दिया है भाई साहब ने, चाहे वो जूम वालों का तो बात ही छोड़ दो, ये तो पूरे बॉलीवुड के चाटुकार हैं। अर्नब गोस्वामी के सही जवाब नहीं दिया। लड़खड़ा के बोलना ये दिखाता है कि वो सारा सच जानता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। किसी का दबाव है उसके ऊपर। अब किसका है ये तो पता नहीं। और ये किस हिसाब से ये गधा मुंबई पुलिस को क्लीन चिट दे रहा है। वो मुंबई पुलिस जो एसएसआर के फैमिली का एफआईआर तक नहीं लिखती। भाई तू हर जगह फोटो खींचते रहता है, उस दिन फोटो नहीं खींच सकता था तू? और तुम लोग इतने हट्टे कट्टे हो, चाहते तो तुम लोग कंधे से मार के दरवाजा तोड़ सकते थे। चाबी वाले को क्या बुलाने की जरूरत थी? करेक्ट। चाबी वाले को क्यों बुलाया तुम लोगों ने? मतलब शुरू से लेकर आप एंड तक देखिए कि इन लोगों की बात में कोई सिर पैर नहीं है। कहीं से जोड़ जाड़ के किसी तरह बोल के पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मैं वही कह रहा हूँ, अभी मैं सुनीता जी को सुन रहा था जो, और अभी मुझे अगेन आई एम रियली हैप्पी टू हियर कि सुनीता जी जैसे लोग आज भी 2 साल बाद भी दे आर रोरिंग, दे आर रेडी टू रिप अपार्ट। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आई एम ग्लैड कि हम ये सेशंस के थ्रू वो चीज़ रिवाइव कर पा रहे हैं। आई एम ग्लैड कि हम इस तरह से चीज़ों को लाके लोगों को फिर से इरिटेट, पोक, इंस्टिगेट, यहाँ तक मैं ये भी कहूँगा कर पा रहे हैं। सो बहुत अच्छा बोला सुनीता जी, अगर आप अभी भी सुन रही हैं, थैंक यू फॉर पुशिंग दिस, थैंक यू फॉर वो फायर जलाने के लिए फिर से, क्योंकि आई थिंक ये हमें वो फायर ही है जो मिसिंग है। बहुत हो गया ये गुडी बातें करना और वेट करना, होप रखना। होप रखो, होप हम सब रखेंगे, बट अब हम लोगों को खुलेआम, वी आर गोना रिप देम अपार्ट। सो इट्स टाइम, इट्स एब्सोल्युटली टाइम टू रिप एवरीबॉडी अपार्ट, चाहे कुछ भी हो। अब हम नहीं हटेंगे। सो बिफोर आई एंड दिस सेशन, सिमी जी अगर आप आना चाहती हैं तो मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। आयुष, क्या आपका आज बर्थडे है क्या? Yeah. All right. Happy birthday to you from Happy birthday, Ayush. happy Thank birthday. you. God bless you. ऐसे ही आप भी अच्छी लाइंस लाते रहें, अच्छी बातें करते रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऐसे ही जुड़े रहें इस मूवमेंट से, बिकॉज वी नीड एवरीबडी, एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु इज पार्ट ऑफ दिस चेंज। ये जो चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में, इसके लिए हमें हर उस इंडिविजुअल की जरूरत है, एंड यू हैव बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट एंड अ वोकल वॉइस इन दिस। सो हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग प्रॉस्परस हैप्पी लाइफ। एंड जिसका भी और बर्थडे है, आप सबको भी, बट अगर आप विश करना चाहते हैं, आई कैन सी चैट में लोग आपको विश कर रहे हैं। सो टेक ऑल द ब्लेसिंग्स एंड कीप रोरिंग ब्रदर। Thank you. Happy birthday, Ayush. God bless you and enjoy your day and have a blessed life. And Thank you. Varun, few points. हाँ जी। My pleasure, bro. So, few points. One, 15th June, after the final ride to Sushant, when the family came back home, we saw that these bikharis, these beggars, were freaking chit-chatting, doing time pass in kitchen and making chicken after the funeral. इतने तो बेशरम लोग हैं ये लोग। सेकंड थिंग, जैसे सुनीता जी ने एक पॉइंट रेज किया था अबाउट फज. Fudge was not there on 13th for sure, but yes, he was there on 14th. There are videos of Republic Bharat that Neeraj is getting him out when the Republic reporter was there. The alone lady was reporting that time.
Neeraj had taken Fudge out of the gate. That video is clearly there. So I'm sure Fudge को 13th को ही ये लोग ने कहाँ तो वैप करके रखा था, because everybody knows how dogs are. And if Fudge would have been there, जो 4 चोमूज और जितने भी 10-12 गए होंगे सुशांत को मारने के लिए, Fudge अकेले उनको चीर फाड़ देता था उधर भी. Forget about Fudge. If these bloody jokers, criminals, if they wouldn't have used that stun gun to paralyze Sushant, a tracer gun, whatever you want to name it as, वो 4 नौकर और 10-12 जो भी गए थे उसको मारने, सुशांत अकेले उनको फोड़ देता. सुशांत में उतनी कैपेसिटी थी. We know how strong he was physically, mentally. We have seen his workouts. वो 10-12-15 जितने थे सबको सुशांत अकेले फोड़ देता. ये बेशर्मों ने स्टन गन यूज करके अपनी औकात दिखा दी कि नपुंसक लोग ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनकी औकात ही नहीं है कुछ करने की. And about Siddharth Pithani's bail today, yes, fingers crossed. And of course, on 12th July also, शोडेल की भी बेल हियरिंग है. एनसीबी ने वापस चार्जेस अप्लाई डाले हैं 27 सेक्शन 27A एंड ऑल. उसकी भी हियरिंग है on 12th of July. So fingers crossed for that as well. Very soon, all these Chappal Chor, Chodel and all will be behind the bars. The red ribbon is ready. They will be going and cutting it, and they'll be busy inside the jail. That is for sure. मैं तो कहता हूँ वो हरा वाला जो कपड़ा है वो उसी से सबको वेलकम करना चाहिए. इनको पता लगे. Absolutely, that Fab India का कुर्ता था वो सुशांत का. वो उनकी औकात नहीं होगी वरुण भाई लोग ये सब खरीदने की, भिखारी लोग की. And so it's raining in Mumbai since last 4 days. It's continuously raining, but our protest is already decided, finalized. 17 July is the next Mumbai protest. No matter if it's raining, it's going to pour. We are going to roll at Mont Blanc. Maybe शायद अगर बारिश होगी तो हम शायद जो टेबल्स लेके जाते हैं, फोटोज लेके जाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा. प्लेकार्ड्स लेके जाएंगे. अगर बारिश नहीं हुई तो सब लेके जाएंगे. बारिश हुई तो भी जाएंगे. एंड वी विल बी रोरिंग. एंड नाउ तो द गवर्नमेंट इज आल्सो चीफ. हम पहले भी नहीं डरते थे मॉन्ट ब्लैंक पे जाकर रोर करने से. अब तो हमें और आजादी मिल गई है वहाँ पे जाके रोर करने की. And Varun, few things to all the viewers. माउंट ब्लैंक के गेट पे आप लोगों ने देखा होगा पहले तो सीसीटीवी कैमरा का जो था बोर्ड. It's no more 15 days, 20 days. The CCTV camera which was there at the gate, जो नारियल का झाड़ है, आम का पेड़, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा था, वो भी उखड़ चुका है. That's also no longer there. And that fellow, yes, of course. तो फिर मैं पिछले 1.5 महीने में मैं every alternate day, every 3 days I'm going to Mont Blanc at weird times. Last week I'd gone at 4 in the morning once my shift was done and Mont Blanc का gate was open at 5 AM in the morning. वो भी वीडियो निकाल के रखा है मैंने. मैं भी थोड़ा बहुत सीबीआई बन रहा हूँ इस केस में. इतना इन्वॉल्व हो चुका हूँ कि धीरे धीरे मुझे भी सीबीआई बनना पड़ रहा है. 5 o'clock in the morning, Mont Blanc gate is open, dude. And that Chomu watchman who used to always crib, यहाँ पे नहीं करने का, यहाँ सुशांत का कुछ नहीं है. Even he is गायब from 15-20 days. छुट्टी पे गया है कि उसको गायब कर दिए हैं. You never know what's the truth behind. But that Chomu is also not there. There are a couple of new watchmen are there at Mont Blanc now. Achha. That same fellow who stops us not to do anything outside Mont Blanc. That same fellow who opened the gate when CBI was supposed to go to Mont Blanc, लेकिन उसके पहले मुंबई पुलिस अभी पानी पीने के लिए आती है Mont Blanc में जाने के लिए. When the interviewer is asking the Mumbai police people, सर आप यहाँ क्या करने आए थे? तो पहले तो 2 जन एक्टिवा पे निकल गए, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया. बट जब गाड़ी में जो बैठे थे उसमें से जब पुलिस ऑफिसर को पूछे तो बोलते सर हम पानी पीने के लिए आए थे. कह रहे कि 10 रुपए नहीं करे तुम लोग के जेब में बाहर से बिस्लरी लेने के लिए. माउंट ब्लैंक के पानी में इतना क्या खासियत है तुम लोग माउंट ब्लैंक आते पानी पीने को? वो भी उसी दिन जिस दिन सीबीआई आने थी उसके आधे घंटे पहले बारिश में आप लोग जा रहे हो माउंट ब्लैंक पे. Everything will come out, Varun. That is for sure. There's no two ways about it. We are going to get justice. Justice for Sushant Singh Rajput, Disha Salian, Jia Khan, and all of the pure souls. Thank you, Varun. Hello, Sunny ji. Thank you. Namaste, Sunny ji, and welcome. Happy 4th आपको and happy 4th सबको. आपको भी.
disturbance अभी तो हुआ नहीं है. I'm just hoping the Wi-Fi works okay. Last time I removed the Wi-Fi just to make sure, then maybe that's the problem. but वो सब भी नहीं solve हुआ. No, Okay. good. You चप्पल चोर का किया आपने, बहुत अच्छा किया. एक इंटरव्यू मैंने देखा, दूसरा नहीं देखा था, so I got to know more. And everybody spoke so well, especially our wonderful lady जिसने उसको dog kaha, and you and I, we know they are loyal. Yep. So this Exactly. guy doesn't deserve that title either. Absolutely. So, yeah, no, and we'll just keep on fighting, and there's hope that we have to have that, and unity, and keep rolling. Audio hai, video hai, sab samne leke aane ka hai, and I don't think CBI has missed anything, but we have to push the issue. तो ये कौन नमो नमो सुनेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, absolutely. And before you sing, मैं इतना कहूँगा कि I'm gonna end this on Simi G's beautiful song now. Thank you so much everyone, and let's keep roaring. Back to Basics start हो चुका है. Today was, I would say, episode 1. We'll do more of these, and all the conspirators one by one. We're gonna show you more stuff. Again, the whole intention is, and I am being very honest, the whole intention is to instigate you, me, everybody who has been fighting, raising voice around Sushant, the injustice that has been done to Sushant. तो हम लोग, और मेरा सिर्फ इंटेंशन यही रहेगा कि मैं अगर 10 लोगों को भी इंस्टिगेट कर सका, जैसे आज मैंने सुनीता जी को सुना और मुझे अच्छा लगा, उन्होंने गालियां तक दे दी ऐसे चप्पल चोरों को, और मुझे बहुत ही आई फील प्राउड. मुझे ऐसा लगा कि मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, कि अगर लोगों को गुस्सा आ गया दोबारा सेन के ऊपर, दैट विल कीप देम talk about Sushant, about these idiots, about these criminals. So we'll keep on doing that. Thank you so much. And yes, Simi ji say ab last jate jate we'll be listening to the song. Thank you so much. अच्छा, हर हर महादेव. अभी मैं दही रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाई हूँ मैं, तो जस्ट पार्डन मी. आवाज फिर भी निकलेगी. जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह. मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला. तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा. सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था. क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता. सीपियों के ओठ में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह. मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा. अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा. तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा. चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र भाग छाल का है खड़ाओं पाँव में. प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में.
दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, धुंध दोनों लोक में विषामृत था छिड़ा। अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सबको मेरा नमस्ते। वेरी गुड सेशन, थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक और चीज जो जूडी ने पहले नहीं मुझे पता था, बट हैप्पी बर्थडे जूडी, आपको भी बहुत ढेर सारी हैप्पीनेस, सक्सेस, lots and lots of love and regards to you as well. So both Ayush and Judy have a blessed day. Very nice. Happy birthday to the wonderful people, and bye to all, and thanks again, Varun. Thank you so much. Take care, Simiji. All right, guys, we'll continue this back to basics, and keep supporting, keep sharing, and make sure we keep on roaring for Sushant, for Disha, Jia, and many more. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. I'll see you guys later.